का स्वागत करते हैं। इससे पहले हमारा प्रोग्राम शुरू हो और आगे बढ़े, हम रिक्वेस्ट करते हैं if everyone can come inside, maybe all the children can come in the front. We are all going to have a spiritual experience. It is not only a religious experience. बहुत से आदिवासी बच्चे और लोग दिख रहे हैं मुझे, तो everyone please, we'll try and have a discourse in English, Hindi and English together. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन पीपीटी फाउंडेशन श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलो कृष्ण भगवान की। परम पूजनीय परम आदरणीय परम सिद्धे व्यासपीठ पर बैठे हुए आज की जो कथा प्रचारक है श्री विश्वनाथ जी के चरणों में शास्त्र प्रणाम है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों जी ग्राम लेडीज एंड जेंटलमैन the head teacher of Ram Visesar Chaudhary Memorial Primary School, the management of Ram Visesar Chaudhary Memorial Primary School, the staff, the students, parents, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करना चाहूंगा। अपने लिए एक जोरदार ताली बजा दो। आदमी तो हम सब है, पर है वो आदमी जो आदमी के काम आए, जिसके आने से चमन में बाहर आए और जिसके जाने से हर पल उन्हीं की याद आए। आप लोगों ने I may speak in Hindi and I like to welcome each and every one of you. I have seen this wonderful lady. She was clapping when we are praying, we are singing from here. That shows that our Krishna is so lovable. कितना प्यारे है वो। आज सभी धर्म को जोड़कर रखने वाले हैं प्रभु है, इसीलिए ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस समय पर आप सभी का पदार्पण हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा नाम धर्मेन है और मैं बहुत ज्यादा भाषण आज नहीं दूंगा। किसी ने मुझसे कहा कि जमाई देना, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए आए हैं और ऐसे में एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी को सुनने के लिए आए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से आज की जो प्रोग्राम है और राम विशेषर डे सेलिब्रेशन में सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। मैं देख रहा हूँ कि टीचर्स
पूरे तैनात है स्टूडेंट्स को रोकने के लिए। वी हैव लॉट ऑफ आवर इतोके स्टूडेंट्स दे एट द बैक, दे मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, बट आप लोगों ने हम लोगों के साथ दिया है, रोक कर रखे, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना। परम पूज्य ने ब्राह्मण देवता को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। इस राम विशेषर चौधरी मेमोरियल स्कूल के प्रधान जी, आपको भी साथ साथ प्रणाम। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इससे पहले कि आज का जो प्रोग्राम है हम आगे लेकर चले, जो कथा है, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आज की जो हमारी माता श्री मैडम अर्चना नारायण जी के, मिसेस अर्चना नारायण जी, आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे, वाइफ ऑफ लेट ट्रस्टी श्री महेंद्र प्रताप नारायण जी और ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ राम विशेषर चौधरी जी, जिनके याद में आज ये भव्य प्रचार कथा जो योजना किया गया है प्रभु जी के नाम पर, मैं निवेदन करना चाहूंगा हम सबसे पहले फूलों के हार से आज का जो हमारे व्यासपीठ पर मुख्य व्यास जी को हम स्वागत करेंगे। तो निवेदन करना चाहेंगे श्रीमती अर्चना नारायण जी से कि आप आइएगा, हम तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। जय हरे कृष्ण, जय ठीक है, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। आई लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, और वी आर हियर टू सेलिब्रेट राम विशेषर डे एंड सिंस 1853 ये पाठशाला और राम विशेषर चौधरी मेमोरियल स्कूल की योजना किया गया है। नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा परम पूजनीय श्री विश्वनाथ दास जी से, जो आज की आगे की जो कथा है लेकर चलेंगे। उसके तुरंत बाद कथा जैसे समाप्त होगी तो मैं बुलाना चाहूंगा जो मैडम है टीचर ऑफ राम विशेषर, वो आकर छोटा सा स्पीच बोट ऑफ थिंग्स, फिर उसके बाद में जो तुलसी पूजा है वो होगा, आरती होगा, फिर उसके बाद में प्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो ऐसे में एक बार फिर आप सभी लोगों को आने के लिए अनेकों बार धन्यवाद है। पूजनीय हरे कृष्णा। So let us first and foremost, once again I welcome you all to today's gathering. It is a very special occasion, and as our MC has said, this is celebrating the establishment of this institution here, and indeed it is very, very special. So first and foremost, let us offer our respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead, the Lord Almighty. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha। Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vande Aham Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Guruna Vaishnavangsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। टुगेदर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, as we have all gathered here today, we must understand everything in this world and everything in our life is destined by the Lord Almighty. हमारे जीवन में सभी कुछ भगवान के द्वारा निर्धारित होता है। Today your presence here and my presence here is ordained or the will of God. ये भगवान की इच्छा है कि आज हम लोग इस पुनीत समय पर यहां पर एकत्र हुए हैं। कभी कभी हम लोग विचार करते हैं कि कोई संत हो, कोई बहुत बड़ा भक्त हो, कोई साधु हो तो वो भगवान का नियुक्त किया गया हो। Sometimes we think that preachers of the word of God are the chosen one. But today sitting here, realization comes to my mind that in fact, sharing the word of God with you, I am only His instrument. I am only His instrument. The chosen ones are all of you sitting here today. Because your presence here, I am sure the management committee, the school, had extended invitation to so many other people. But only the chosen ones are present here. Only the chosen ones are present here. जिसको भगवान चाहते हैं केवल वही यहां पर उपस्थित हुआ है। और आज हम लोग कहां पर उपस्थित हुए हैं? विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। दिस इज अ प्लेस ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है। और जिन्होंने भी इस शिक्षा स्थली के बारे में विचार किया है, मुझे बताया गया है, जो यहाँ के जो शुरू करने वाले हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे पाठशाला का लगभग 13 एकड़ जमीन है जिसमें ये पाठशाला बना है और सेकेंडरी स्कूल बनने का विचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि यहां पर कम से कम मेरे ख्याल से मुझे बताया गया है 650 बच्चों का शिक्षण होता है। अबाउट 650 स्टूडेंट्स आर बीइंग एजुकेटेड इन दिस प्लेस एंड दिस 650 स्टूडेंट्स आर सिंपली एट द मर्सी ऑफ how many teachers are there? What's the staff roll? 33. About 33 teachers. यहां पर क्या किया जा रहा है? What are we doing here? We are shaping the life of the 650 students. And this shaping the life of 650 students is not limited to the students. It is extended to their siblings, their brothers and sisters, their parents, and if many of them are living in the extended families, this education is passing on to these many people. Education has a multiplier effect. संसार में जो भी कुछ हम लोग एकत्र करेंगे वो सब ये शरीर के नाशवान होने पर सब नष्ट हो जाएगा। Whenever we are going to die, all the education, all the material possessions is going to come to an end. It's going to come to an end. Then what is eternal in life?
जीवन में शाश्वत क्या है? जीवन में शाश्वत केवल भगवान है. इटर्नल इज ओनली गॉड है. एंड वी बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, द स्पिरिट सोल्स, वी आर इटर्नल. वी हैव इटर्नल लाइफ. वी बिलोंग टू इटर्निटी. हमारा जीवन जो है वो शाश्वतः के लिए है. हमारे सनातन धर्म के अंदर में जीवन की सफलता मोक्ष को कहते हैं. मोक्ष प्राप्त करना. मोक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेशन, या व्यक्तित्व रूप में उसको कहते हैं इटर्नल लाइफ. यह जीवन का लक्ष्य है. हमारा जो शिक्षालय है, जो विज्ञान की स्थली है, जहां पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, हमारा ग्रंथ कहता है शाश्वत ज्ञान की प्रदान करना चाहिए. इटर्नल नॉलेज जीवन में स्वीकार करना चाहिए. और विशेष करके कलयुग में श्रीमद् भागवत पुराण का उल्लेख है. पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वां श्लोक में यह भविष्यवाणी किया गया है कि अभी के समय, वर्तमान काल में, इन टुडेज डे एंड एज, द सोसाइटी, द कम्युनिटी, द पीपल विच मेक दिस कम्युनिटी, the communities make towns, villages. The villages and towns make the country. The different countries get together to make this world. But through the word of God, according to the Vedic text of Srimad Bhagavatam, chapter 1, canto 1, chapter 1, verse 10, it is said that in today's world, people will be prayena alpa yushaha sabya kalab asmin yuge jana mand sumand mat bhagyah mand bhagya hi upadrita. What is the word of God? In this age of Kali, this is called Kali, means it is Iron Age. Iron Age means this is a life of struggle. What is the concept of living? Survival of the fittest. Everything is competition. In school, we teach students competition. In homes, we teach people competition. What do we teach? Oh, my son is going to be the first one to eat. Oh, my child is going to be the first one in class. So what are we implanting in people? Competition. When these young people, young minds, naive souls grow into adults, they become competitive in life. In school you learn to compete in education, then you also learn to compete for girlfriend. When you start working a job, you start competing in the workplace as well. You know what is the disadvantage of competition? The disadvantage of competition, it promotes pride. You're absolutely spot on. What else? Envy, ego. And what is the biggest problem of this world today? Hatred. Competition evolves, generates hatred. And when the heart becomes filled with hatred, what do? We hurt one another. We hurt one another. There's a story. Once, there was a child. He was coming from a very, very poor family. So he's going to school, and in the school the teacher said that for your class you need to bring such and such things. एक बार एक बच्चा था, बहुत ही गरीब परिवार से आता था. तो उनकी जो शिक्षा, जो टीचर थी, उन्होंने बताया बच्चे को कि कल क्लास के लिए हमको ये किताब की आवश्यकता है, और जिसके पास ये किताब ना हो तो वो कक्षे में ना आए. इफ यू डोंट हैव द बुक, यू नॉट सपोज टू कम टू द क्लास.
So this little boy went home. His mother was a maid servant working in the various homes of the people in the village. So the son said, the teacher has said, if you don't have the book, don't come to the class tomorrow. So the mother was very worried. She said, I barely earn enough to feed you. Forget about feeding my own self. I go without food to feed you. How can I buy a book? So the next day, the child went to the school and he went very early to school. So there were few students in the school, in the class already. When the children come early to school, what do? They leave their bags in the classroom and they go and play. So this boy, who is supposedly very intelligent, coming from a very poor family, he saw all the other children playing. He went and stole the book from one of the students' bag. So when the teacher was asking for the book, he had the book, but the other student didn't have the book. So he was saying, no, I had the book. But there was no evidence that he had the book because he didn't have the book in front of him. So the teacher chased him out of the class. And the poor boy had the book. He went through the class. He went home and he said, Mom, I have a good news. The good news is that I stole the book from another student. What did the mother say? Huh? The mother said, my boy is very intelligent. You have found a means to educate yourself. So the mother was very happy. And more happy than the mother was the child. That I have learned to survive in this world. सभी को जीवन में जीना होगा. हम लोग यही सीखते हैं. हमको यही सिखाया जाता है कि हम लोग को जीवन में जीना है. तो इस तरह से किताब चुरा के बच्चा आगे बढ़ गया. एक बार चोरी किया, दूसरा बार चोरी किया, जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे बड़ा बड़ा चोरी करते गया. फिर एक बार इतना अगम पाप कर दिया. One time he committed such a grievous sin that in the bygone days the king would give death sentence for a very grievous offense. So he was given death sentence. So before capital punishment was there, and before anyone is killed or hanged to death, you have a last wish to ask for. So the child said, the young man now said, I have one wish. I want to talk to my mother for one last time. So the mother was brought, and the mother said, crying that, my dear child, what do you want to tell me? So the child said, no, I want to whisper what I want to say in your ears. I don't want anyone else to hear. So the mother came close to the son, the dying man, brought her ear close to him. And what did the young man do? He bit off the ear of the mother. He bit the ear of the mother. And the mother yelled. And the soldiers came and separated them. And the king said, why did you do this to your mother before dying? The young man said that on the very first day, the first time I stole the book, had my mother not heard me and encouraged me, I would not be dying today before time. I had a life to live, but because my mother encouraged me in the wrong path, I am here suffering death. This is equally applicable to us when we don't hear the word of God, when we don't share the word of God. ये वही वाक्य है जो हम लोग अपने जीवन में भगवान के कथन को, भगवान के वचन को अपने जीवन में नहीं स्वीकारते हैं तो हमारा जीवन किससे भर जाता है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. If you don't hear the word of God,
your life is going to be that of birth. Everyone is born. सभी को यहां पे जन्म लेना पड़ता है. Intelligent person should ask, why is someone born rich? Why is someone born crippled? Why is someone born poor? Our birth is determined by what we have done in our previous life. Some of us might not believe that we have life after death. But there was a life before death, and there is going to be a life after death. Who continues the journey into the three past, present and future? It is the spirit soul. हमारे सनातन धर्म में तो हम लोग बराबर समझते हैं. अगर किसी को समझ में ना आए तो श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं होता है. श्राद्ध क्यों किया जाता है? कि हमारे पूर्वजों को जो मृतक है उसको नरक जाने से बचाया जाए, या उसको वैकुंठ की प्राप्ति कराया जाए, शाश्वत जीवन की प्राप्ति कराया जाए, मोक्ष अवस्था की प्राप्ति कराया जाए. लेकिन ये प्राप्त कर पाना निर्भर है हमारे ज्ञान पर. हमारे ज्ञान पर. जब हमको ज्ञान ही ना हो तो अपने जीवन को कैसे निर्वाह करेंगे? भगवान के जो शब्द हैं, वर्ड ऑफ गॉड जो है, ये हमारे जीवन का मार्गदर्शन है. द वर्ड ऑफ गॉड इज द गाइडेंस फॉर आवर लाइफ, हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ. जब हम भगवान के बातों को नहीं सुनते हैं तो हमारा हृदय, खुद का हृदय, हमारा समाज, हमारा देश काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य का ग्रस्त हो जाता है. मतलब इसमें फंस जाता है. वी बिकम एंटेंगल्ड इन द लाइफ ऑफ material desires. When these desires are not fulfilled, anger happens. When one is angry, one is completely mad. In anger, people are not in the stable state of their mind. They don't know what they are doing. When people are angry, even swearing happens. Violent words come out of the mouth. We need to understand this. This is the responsibility of the parents, and pardon me, more so the responsibility of school teachers. Because when our children are in the best awakened state of the day, they spend their time with teachers in the school. The fully awakened conscious time, 8 a.m. to 3 p.m., when the children are awake and not sleeping, they spend the time with teachers. इसीलिए हमारे ग्रंथ कहते हैं कि बच्चों को कौमार आचरात प्रज्ञ, बाल अवस्था से ही बच्चों को भागवत शिक्षण देना चाहिए. आज हम लोग का यहां योजना है भागवत कथा का. भागवत कथा का मतलब केवल कृष्ण लीला, राम लीला, नरसिंह वामन भगवान के अवतारों का लीला का वर्णन नहीं. लीला तो भगवान करते हैं. जैसे एक पाठशाला में ड्रामा किया जाता है, when we are performing a drama, what is happening in the drama is important, but it is not as important as the theme of the drama, the message of the drama, what is being said. इसीलिए भागवत में जो शिक्षा दे रहे हैं, जैसे रामायण का शिक्षा हम लोग देख रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास स्वीकार किए क्यों? कोई बताएगा भगवान रामचंद्र जी वनवास क्यों गए? What is the moral lesson behind Ram going for self-exile? राम जी क्या कहते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर I cannot disobey the orders of my father. Why? Because father had given the promise. He had given 3 promises to his good wife.
because she protected. Once when the king was injured in a battle, the queen nursed him to good health again. Therefore, in return, King Dashrath gave 3 promises to his wife, the queen. The queen said, "No, my love, I have nursed you back to health because that is my duty as a good wife." But the king insisted that I must reciprocate. Therefore, I am giving you 3 boons. Ask for anything. So the queen said, "I don't need anything, but hence, because you are giving me the boons, I will ask of it when the day comes or when I need something." So there was a time the queen's, elder queen, because in bygone days, the kings used to have many, many wives. In today's world, we cannot do that, because even looking after one wife is very difficult. People get married, even they can't look after the wife for 3 months. After 3 months, there is divorce. Run away. Madam is saying, Marama Ro. Why do the women run away? Because the man can't look after the woman. Look at today's world. What is happening? The wife has to work. Bygone days, the man works and the wife looks after the children. She looks after the household. In today's world, in terms of equal rights, human rights and all these things, what is happening? Women are being exploited. That is why they unroll. They are being exploited. The man at home is exploiting them. The employers are exploiting them. The whole world is exploiting them. The word of God is said that when the women are exploited, there will be unwanted population in this world. We don't have a problem of street kids. We don't have the problem of looking after old people. The problem is women are not protected by men dually. They don't look after women properly. Therefore, these women get exploited, and therefore we have unwanted children. The scriptures, the word of God says that in bygone days, the women would die for their child. If a woman was about to give birth, and if there were complications, the woman would die but yet want to give a birth to a living child. What is today's world? The women are going to abort their embryo, the child that is unborn. Where is the motherly love? The closest experience of godly love is motherly love. But in this world, even the motherly love is now deteriorated. मात्र प्रेम जो है, ये भगवत प्रेम का सबसे नजदीकी अनुभव है जो संसार में किया जा सकता है. एक माता अपने बच्चे को निष्काम भाव से पालती है. माता कभी नहीं सोचती है कि मैं ये बच्चे को पाल देती हूं, उसको दूध पिलाती हूं, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये मेरा सेवा करेगा. कोई माता अपने बच्चे को पालन पोषण करते हुए ये नहीं सोचती है. आज समाज में समस्या वृद्ध आश्रमों की नहीं है. समस्या है तो इस बात की कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं. जब बच्चों को सही धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, when I am talking about spiritual knowledge, I am not talking about, I want to clarify myself, I am not talking about any belief system. I am not talking about religion. I am talking about spirituality. Means I am talking about spirit, soul. Faith can be different. Faith can be different. I may have a certain faith. I may believe something. But all of us will agree that God is only one. Water substance is one. We can call it water in English. We can call it pani in Hindi. Or you call it Y in Itoke. But does the substance change? No. भगवान कभी नहीं बदलते हैं. चाहे उसको कलौ बोलो, चाहे भगवान बोलो, चाहे परमेश्वर बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे करिसितो बोलो, जो आपके भाषा में आता है. By our language,
God does not change. God is same all the time. All our schools, all our lives should be guided by the word of God. I'm not talking about Christianity, I'm not talking about Hinduism, I'm not talking about Buddhism, I'm not talking about Islam, I'm talking about God and His Word. What is the Word of God? Word of God is the name of the Father in heaven, Thou Lord, be Thy name. Hallowed by be Thy name. हमारा ग्रंथ क्या कहता है? राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगा. Even if we say, for example, the spirituality in every religion is that every religion is saying, every faith, every belief system is saying that we should praise the Lord. How we should connect with God. हम लोग सब जब भगवान से जुड़ेंगे, आज समाज कैसा है? आज समाज में प्रेम का आवश्यकता है. आज समाज में द्वेष है, ईर्ष्या है. लोग एक दूसरे को समझते नहीं. हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इस देश में कैसे रहेंगे. अरे भगवान तो ये सोच रहे हैं कि आप लोग संसार में कैसे रह रहे हैं. ये संसार हमारा जगह नहीं है. हम और आप सब भगवान के धाम के वासी हैं. इसीलिए जब मैं विचार करता हूं कि श्रीमान राम विशेषर जी ने जब ये कल्पना भी किया कि शिष्टता का स्थली बनाना चाहिए, तो मैं कृपया प्रार्थना करता हूं जो उनके वंशज है, जो कार्य करता है पाठशाला के. अभी हमारा अवस्था क्या है कि कलयुग में धर्म का भेदभाव करके हमारे पाठशालाओं से भगवान के शिक्षाओं को भी निकाल दिया गया था. कम से कम अभी सरकार हमें सभी पाठशालाओं में भगवान के बारे में चर्चा करने का अनुमति दे रहा है. हमारा हरे कृष्ण संस्था के भक्तजन कई स्कूलों में जा रहे हैं और भगवान में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं. We think today's problem is the drug. We think today's problem is illicit sex life. But today's problem, the root cause of all the problem is lack of knowledge of God. ऐसे तो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, हम लोग सभी लोग जानते हैं, अधार्मिक स्त्री संग वर्जित है. बाइबल में भी यही बताया गया है. अडल्ट्री 10 कमांडमेंट में बताया गया है, वन शुड नॉट कमिट अडल्ट्री. बट हु इज फॉलोइंग? Who is following? What is the society doing? Even if you have to sell a motor vehicle tire, you have to picture it with a half naked woman. What does the tire have to do? Vehicle tire have to do with a naked woman. But this is what the world is planting in everyone's mind. Then how can we avoid adultery? शायद मुझे मालूम नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं, वर्तमान से हम तो परिचय होना चाहिए. भागवत धर्म जो है, भागवत पुराण जो है, हमारा सनातन धर्म जो है, ये बीमारी का इलाज जड़ से करता है. हमारा बीमारी क्या है? हमारा बीमारी है कि हम लोग भगवान से विमुख होके ये मृत्यु संसार में आ गए हैं. मृत्यु संसार का गुण क्या है? यहां पे सब वस्तुओं में पाप है. आहार में भी पाप है, कर्म में भी पाप है, कोई भी कार्य करो इसमें पाप है. हमको ये समझना पड़ेगा. प्लीज आप समझे ये बातों को. ये बातों को समझना चाहिए कि हमें बीमारी को, जैसे एक व्यक्ति, जस्ट एज वी नो इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और सम ट्यूमर, द एरिया यू डिटेक्ट इट एंड रिमूव द सेल, द ट्यूमर सेल, there is some hope for survival.
But if you diagnose it very late, then there is no hope. What is the cancer of society today? The cancer of the society is lack of knowledge of Godhead. Just like you buy a TV set, a smart TV, you bring it in your home, you have to go through the manual to find out how to operate it. If you did not operate it with a manual, knowing it how it should be operated, what is the result? The result is you will damage the TV. This body is not different from a machinery. It's a very delicate and a sophisticated instrument of God. Look at the scientific creation of God. Look at how He's wired the brains. Look at how He has wired the sensory system. Look at how He has wired the nervous system. You got hurt in your foot. You know in your brain that you are hurt. Huh? The neuron sends the message to the brain, it comes back, and look at the speed of the transfer, the data transfer. We think Wi-Fi, God has already created a Wi-Fi. Huh? God's Wi-Fi is Wi-Fi of love. That's how you connect. Huh? You need to know the password to connect to the Wi-Fi. How do you connect to the Wi-Fi of God? By calling upon His holy name. In Sanskrit we call God Almighty, who is the reservoir of all pleasure. As soon as you get your life connected with God, what happens? You become happy. Huh? It is not only happiness. Actually, once you connect yourself with God, you become blissful. भगवान से जुड़ने में केवल सुख की बात नहीं है. भगवान को नहीं बोला गया है कि भगवान क्या है. भगवान को ऐसे नहीं बोला है कि भगवान सुखी ना है. भगवान को बताया गया है आनंद कंद भगवान. आनंद को ब्लिस कहते हैं. Bliss is the state of the happiness of the soul, not of the mind. Happiness of the mind can be achieved by smoking some marijuana. You can become happy in the mind for some hours. But we are talking about happiness of the soul. The soul can only get happiness when it is connected to Bhagavan. What does Bhagavan mean? Bhagavan does not mean, some form of God wearing a yellow dhoti, playing a flute. No. Bhagavan means He who is full of all opulence. He who is the master of the whole creation. Our problem is, we are thinking this is my land. Our problem is we are thinking this is my property. We are thinking this is crown land, this is native land, this is freehold. Arey Baba, we are not free in this world. When death comes and stands in our face, have you come across anyone who has defied death? Anyone here can give me an example? जिसने मृत्यु को नकार दिया है? अगर सत्यवान सावित्री का उदाहरण भी लिया जाए, अगर कोई बोले सावित्री ने यमराज को वापस कर दिया, तो किसके बल पे किया है? सतीत्व के बल पे किया है. भगवान पर being chaste to Bhagavan, being chaste to the Lord Almighty, being chaste to the word of God. What is the word of God? Word of God was to Adam and Eve. He said, do not eat the forbidden apple. We are all descendants of Adam and Eve. What is the reason? Where did we incur sin? How did we incur sin? That the Father in heaven has to give His only begotten Son to wash away our sin. That's okay. But let's talk about the root cause of the problem. How did we incur the sin? By disobedience to the word of God. The apple was edible. The apple is no problem. The fruit is not the problem. The word of God that was disobeyed, that is the problem. Likewise, in the Ramayana, in the Bhagavad Purana, in the Vedas, in the Vedic literatures, the same word of God is given.
The same word of God is given in Bhagavad Gita. Yash shastra vidhim utsrijya vartate kamakarata nasa siddhim avapnoti na sukham na param gatim. He who disobeys the word of God and acts whimsically with your own mind. If you act whimsically, अपने मन से जीवन में कार्य करोगे, नसा सिद्धिम, you will never be successful. न सुखम, you will never be happy. न param gatim, you will never achieve the eternal abode, the eternal kingdom of God. Therefore, I am always amazed at this fact. How come every religion, every faith, every belief system is teaching us to love God, but yet we are not able to love one another? What is the value of teaching? If I were to say that I am thirsty and I need a glass of water, have you all heard? Have you all heard that I need a glass of water? Yes or no? Yes, you all have heard. But no one brought me a glass of water. Have you heard? The teachers can say, you tell students things, but they don't act. Do you consider them having heard? Have they heard you? No. The problem is, we are thinking that just by saying somebody hears. If somebody hears, they act. If somebody brought me a glass of water, I would know that this person has heard. Likewise, the word of God, it is not simply for singing. It is not simply for singing the hymns. It is not simply for sermon. It is not simply for prachar. It is meant to be digested. It is meant to be absorbed in our life. Then we say that we are educated. What is the success of the school determined by? The success of the school is determined by the pass rate. The goodness of the pass rate. The school can have 100% pass. But what are the students, qualified students doing? Are they able to get an entry into the university? If they have, they've been educated in the university. Are they able to secure a job for themselves? Are they able to get a good job for themselves? If not, then what is the point of education? Education means we are able to exhibit the knowledge in our character. That is education. Education is not reading the book. Education is living the knowledge. It is living the knowledge. So we may know the word of God, but if you are not living the word of God, then you are still in ignorance. हम लोग तभी भी अंधकार में हैं जब तक हम अपने जीवन में भगवान के वचन को निभा नहीं रहे हैं. Just like in this world, a boy and a girl can get married, but if they don't simply live together, does not mean they are husband and wife. Husband and wife means compromise, sacrifice, standing by one another till death do us part. That is called husband and wife. Not that when you are in bad health, oh sunro. You are in no money, then oh sunro. This is not the life, but this world is happening. Are you all seeing this is happening in the world? The only Savior is God Almighty. But you and I will not be able to see God now. Why? Because we are covered with sins. Then what do we do? हम और आप अभी भगवान को नहीं देख पाएंगे. कोई यहां पे बैठा है जो बोले उसके सामने उसके घर में भगवान प्रकट हो गया है. आप पूजा के स्थान पे आते हैं, जो राम का आप पूजा कर रहे हैं वो राम आपसे बात करने लगे. राम बात करते हैं, कृष्ण बात करते हैं ग्रंथों के माध्यम से. इसीलिए बताया गया है cleanliness is next to godliness. When we are cleansed of our sins, then we can see God face to face. We can talk to God face to face. Every man is made in the image of God. Therefore God has a form.
If you look at yourself in the mirror, because you have a form, therefore you see an image in the mirror. So the Bible says we are made in the image of God. भागवत पुराण भी बोला है कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हम पूर्व में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में रहेंगे. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor these kings, nor they cease to be. भगवत गीता में ना जातु एवा अहम, ऐसा कोई समय नहीं था. भगवान बोलते हैं न मैं था न तू था, न मैं हूं न तू है, न भविष्य में न मैं रहूंगा न तू रहेगा. ऐसा कोई समय नहीं आएगा. हम लोग शाश्वत हैं, हम लोग शाश्वत हैं. आप सभी लोगों से प्रार्थना है, whatever religious belief system you are in, whatever belief system you have, there is one fact of life which is equal to everyone, and that is death. Everyone is going to die, and at death everyone is going to pray to God. Whether you take the dead body to the church and pray, whether you do the Bhagavad Gita at your home for 13 days, or you do the Antyeshti Kriya, or whatever it be, everyone is going to pray to God. So why not now? Why not now? Why wait till you are forced to at the time of death? Death is a form of God. Death is that opportunity. मृत्यु एक अवसर है जब हम इस जगत से उस जगत में जा सकते हैं. Death is one opportunity. We can transcend from this world of death to the eternal life. That's one opportunity. But to take that opportunity, you have to pay the price. You can take a flight from one country to another, but to board the aircraft, you need to buy the ticket. You need to pay the price. What is the price to board or to transcend to the kingdom of God? To follow the word of God. Live a life of discipline. Live a life of austerity. Live a life of love, sharing, caring, and live a life of spirituality. This is the message of Srimad Bhagavatam. This is the Bhagavat Katha. Bhagavat means Bhagavan. Actually, Bhagavan expands into Bhagavan. 3 रूप से आते हैं. एक तो स्वयं भगवान आते हैं. भगवान के भक्त भगवान के शब्दों पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें भी भागवत कहा जाता है और ग्रंथ को भी भागवत कहा जाता है, क्योंकि ये तो भगवान की वाणी ही है. तो भगवान भागवत, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत. ऐसे जीवन निर्वाह करने से हमारा जीवन सुखद हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा. तो एक बार फिर मैं इन शब्दों से कंक्लूजन पे आना चाहता हूं कि कृपया आप सब कोशिश कीजिए. भगवान हमें अभी दिखने वाले नहीं है, लेकिन भगवान अपने शब्द रूप में, नाम रूप में, कली काले नाम रूपी कृष्णावतार, भगवान नाम रूप में आते हैं. इसीलिए सब धर्म में बताया गया है, thou shalt chant the name of thy Lord in the heaven. भगवान का नाम जप करना चाहिए. इसीलिए क्रिश्चियनिटी में रोजरी जप करते हैं. इस्लाम में बताया गया है, नस नस बोले नबी नबी मुंह पे नामे रसूल, कि हर एक श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए. इसीलिए जो सच्चा मुसलमान होता है वो तस्बीह करता है, जो सच्चा क्रिश्चियन होता है वो रोजरी करता है. रामायण कहता है कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिरन रुतरे पारा, कि हम लोग को केवल भगवान के नाम सुमिरन करना है. कौन करते हैं? हमारे उदाहरण में कौन करते हैं? हमको प्रोत्साहित करने के लिए कि अरे तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा. भगवान राम कहते हैं मेरा मंत्र जाप कर, और महामंत्र जही जपे महेशु. शिव जी भी मंत्र का जप करते हैं. भैया हम और आप शिव जी से बढ़ के तो नहीं है. कलयुग में भगवान की अनुभूति होगी भगवत नाम जप करने से. और मैं प्रमाण के साथ में आपको बताता हूं कि ये जो हमारे भक्त हैं, जिनको आप बोलते हैं हरि बोल है, हरे कृष्णा वाले हैं, अगर इनसे पूछो
तो इनके आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में ये अभी तक टिके हैं क्योंकि ये भगवान से, भगवान के नाम के माध्यम से जुड़े हैं। अगर आप नेक्स्ट या फिर प्रोग्राम करो, अगर इनमें से ये भक्त अगर भगवान के नाम जप करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं ये नहीं आएंगे फिर। क्योंकि जैसे ही भगवान से हम लोग जोड़ निकाल देंगे तो क्या होगा, जीवन अंधकार हो जाएगा। जैसे अभी यहां पे बिजली चल रही है, अगर ये EFL के पावर लाइन से जुड़ा ना हो तो क्या ये रोशनी देगी? ऐसे हमारा जीवन भी अगर भगवान से जुड़ा ना हो तो हम लोग क्या रोशनी पाएंगे? इसीलिए हमारा तो वेद मंत्र ही तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से निकलो, अज्ञानता के अंधकार से निकलो। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज लाइट, देयरफॉर enhance your knowledge, enhance yourself with the knowledge of God, because at the time of death this knowledge does not get stolen. You don't lose this knowledge. At death you forget ABCD, you forget your math, you forget your science, you forget everything. Only thing that works is calling upon the Lord Almighty, and we call that Lord Almighty Ram, means he is the reservoir of pleasure. And God attracts everyone's mind, whether it be Christian, whether it be Islam, whether you call him Allah, whether you call him Jehovah, whether you call him by any name, by your language. God is all attractive. Wherever there is a gathering for spirituality, people naturally become attractive, because God is all attractive. Therefore in Sanskrit, the all attractive God is known by the name Krishna. And God is the one who takes away all our sufferings. That is why he is called Hari. He steals away our suffering. भगवान हमारे सभी दुखों को हरण कर लेते हैं, इसीलिए उनको हरि कहा जाता है। इसीलिए बताया गया है साएव मूलम मंत्रम जपति हरिरिति कृष्ण इति राम इति, कि कलयुग में भगवान को पुकारना है तो किन नामों से पुकारो? हरि, कृष्ण और राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरी टाइम यू आर कॉलिंग अपॉन गॉड, व्हाट डू वी से? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। You want someone's attention, किसी का अटेंशन अट्रैक्ट करना है तो क्या करना है? हरि बोल, किसी को बुलाना है, उसको हाथ हिला के बुलाना है। इसीलिए when you are calling God, you raise your hand. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, Ram Ram, Hare Hare. I know everyone is hungry and very soon everyone will be served dinner, but your response is disgusting. I can do it louder alone without the mic. Okay? I want your response. I'll put the mic off. Can you put the mic off? I can shout louder than all these people. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! So thank you very much, and once again I make a very humble request to the school management, to the school head teacher and all the teaching staff, that please, I know we have enough time in our lives that we waste, but take out 20 minutes a day. I know many Christian schools do this. I have been to Dilkusha Primary School, Dilkusha High School here. So I know, I've been through the system. In the Christian schools, every day there's a scripture class. So you read the Bible, the Word of God, so that the children become educated. I have to encourage our schools to please read the Bhagavad Gita or read the pastimes, the moral lessons of Ramayana.
Do this every day in your school so that children get to live with the Word of God. If they do, they develop higher taste. Then they will not have taste for drugs. They will not have taste for liquor. They will not have taste for womanizing. These are all simply cause of material problems. Unless and until you look at saintly persons, how are they able to maintain themselves? Keep away from, I'm not bragging about it, but look at all the devotees. How do they keep themselves free from killing animals? Because they have love for God, therefore they love God's creation. Whether it be human beings, animals, plants or anything, they avoid violence. How are they able to enjoy without getting themselves intoxicated? They are intoxicated by the holy names of the Lord. How are they able to keep their lives clean? Because they are all engaged in studying the scriptures. How are they able to keep themselves in austerity? Because they love God. Therefore they know the best time of the day is to wake up before sunrise and pray. And therefore they all wake up early in the morning. And here, there are wonderful people here. You see this lady sitting here in yellow dress. She's a doctor by profession. She's a doctor by profession. My father is sitting back there. He's retired chief accountant from the government of Fiji. There are wonderful people here. There are business people here. Farmers here. Every kind of, that Mataji, she's a physics teacher. That lady is a physics teacher at Vinmono High School. So this is a society of all educated people. Why do you call them educated? Because they are understanding the Word of God. Unless and until you understand the Word of God, please know the society and each individual is uneducated. So don't let education institution become spiritual slaughterhouses. We don't slaughter spirituality because spirituality is what will save this world. Just as you say, the Father in heaven has given His only begotten Son to save the world. So the Word of God is the only way to save this world. So all of us have to follow the Word of God. और सभी हमारे जो भारतीय लोग जो सनातन धर्मी है, मेरा प्रयास था कि मैं अंग्रेजी में बोलूं. मुझे आपको अंग्रेजी आता है और यहाँ पे कई आदिवासी लोग हैं. जो बाइबल में लिखा है वही भागवत पुराण में लिखा है. क्यों? आपको मालूम है? क्योंकि सबसे पुराना ग्रंथ क्या है? वेद. हर एक धर्म वेद से आया है. जैसे एक गांव में एक मंडली होता है, मंडली में कुछ कुचर पुचर होने से लोग अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग मंडली बना लेते हैं. ऐसे ही वैदिक धर्म में कुचर पुचर होने से सब अलग अलग हो गए हैं. लेकिन भगवान एक है, वेद एक है, ज्ञान एक है, भगवान का नाम एक है. हम सभी लोगों को एक ही मार्ग पे चलना है. और क्या मार्ग है? भगवान से प्रेम करना है. जो भगवान से प्रेम करेगा वो सारे जगत से प्रेम करेगा. और प्रेम दर्शाने का मार्ग क्या है? सम्मिलित रूप से भगवान का नाम गुणवाद करना और सम्मिलित रूप से प्रसाद वितरण करना, भोजन. शेयरिंग फूड इज अ मीन्स ऑफ शेयरिंग लव. Singing together the word of God, the holy names of the God is the means of sharing love. So if we love one another, Naham tisthami vaikuntena yoginam hridecha mad bhakta gayanti tisthami narada, the Supreme Personality of Godhead says that I am always present where all the living entities get together to chant my holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So with those few words, I hope I've encouraged your heart and tried to enlighten your brain system with some knowledge and encourage you to please read the Bhagavad Gita, read the Bible, read the Ramayana. We have Bhagavad Gita in English. Srila Prabhupada ji translated from Sanskrit to English so that the whole world can read the word of God. So please, today we request that before you go, please buy the Bhagavad Gita. It's just $20 a copy. I'm sure, when we drink grog, we spend thousands of dollars. But the word of God simply comes. It is invaluable, but just to cover the printing cost of the book, $20, or there are other books for $2, $3 like that.
So please take a book home and try and read. People who read, they make their lives better. They make their lives successful. Even in the material world, you look at big people who are holding big positions. They've only reached the position because they daily read in their life. They read daily in their life. Even the CEOs, they read the life. And our good Prime Minister also reads the Bible every day. That's why when he speaks, you can see he's always sharing the word of God. So we should learn from great people. Yadyad acharti shreshtas tattad evetaro jana. We learn from great people. We learn from great saintly people. We learn from the devotees of the Lord how our life should be conducted. So thank you very much. Thank you for your patience. And all the children, we will have singing and dancing here. So we want all of you to join. And we'll have a short singing session, just 20 minutes, 15-20 minutes. And after that, everyone is free to have dinner. So thank you all very much. Thank you for your patience. And if any of my word seems to have hurt you, please forgive me for that. But my only intent has to be touch your heart and invoke auspiciousness into your heart and incline you towards the path of Godhead. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. भगवान कहता है मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं पर आसपास हूँ। बंद कर लो अपनी आंखें और दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा विश्वास हूँ। थैंक यू सो मच पूजनीय श्री विश्वनाथ दास जी। I must say you haven't hurt us, but you have really enlightened us with your kind words. और आपने जो हम लोगों को प्रेरित किया है, प्रोत्साहन किया है, उसके लिए हम जोरदार तालियों से प्रभु जी को धन्यवाद दें। क्या बात है, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि जो नशा है डिवाइन में, वो कहाँ है वाइन में। भक्ति का नशा चढ़ाते चलो, मीरा बनो। और आपने मुझसे राजन भैया जी, मैंने जाओ राम विशेष सर, आइंदा के लिए हम लोगों को प्रभु जी को करीबन 2-3 घंटे का समय दे। ये क्षमा करना। आधे घंटे का समय, 40 मिनट का समय तो सिर्फ सुमरनी में ही चला गया। तो डेफिनेटली जो जिस तरह से आप लोगों ने शांत वातावरण को कायम किया है और सुना है, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी इन्होंने कहा है और इससे सभी लोग समझ सकते हैं। और आइंदा के लिए हम जरूर ये रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी संस्था हो, प्रभु जी को बुलाएं और हम लोग करीबन 2-3 घंटे का जो कथा है उसको करेंगे। ठीक है। प्रभु जी ने कहा है कि अक्टूबर में शायद अपने घर पे भागवत रचाए, तो हम लोग 3 दिन पूरा भागवत कथा हिंदी में कर सकते हैं। क्या प्रभु जी, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत ज्यादा समय को ना लेते हुए मैं सभी धर्मों के जितने लोगों का पदार्पण हुआ, जिसे पता है गॉड इज वन, खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, हम सब विश्वास में जुड़े रहे, क्योंकि खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जब तुमसे ना सूझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान पर छोड़ देना ये खुदा के बंदे, क्योंकि वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो हम नहीं कर सके वो हमारा भगवान करेगा। तो ऐसे में एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे बहुत ही प्रिय भाई रजनीश जी है और ये हमारे काका जी के पुत्र है। थैंक यू सो मच, परिवार के साथ में आप हो। द हेड टीचर ऑफ राम विशेषर प्राइमरी स्कूल मैडम शांति देवीलाल जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सनिता देवीलाल जी से, इनको देखकर मुझे शांति याद आ गई है ये सनिता जी। थैंक यू सो मच मैडम। धन्यवाद सधर्मेन। शांति नहीं, सनिता नाम है मेरा। हरे कृष्णा। Lisa Mula and good evening.
Dhanyawad. Thank you, dear parents. I just have been tasked to present the history of the school, and which I will do it in English so that everybody can understand. Thank you, dear parents, for cooperating with us, especially the Itoke brothers and sisters. Thank you for your support tonight. It gives me great pleasure to be here tonight on the occasion of Rambisesa Day celebrations, which the school hosts every year, in honor of late Mr. Rambisesa Chaudhary, who is the school's land donor and founder. I am sure that very few of you would know who Mr. Rambisesa Chaudhary was, and today I would like to briefly dwell on his life. Mr. Chaudhary was born on the 7th of June, 1890 at Nakaikongo, Tonga, Rewa, and he was the son of Rambi Chaudhary, who was a Girmitia. Mr. Rambisesa was the eldest in the family of 7 siblings, 3 brothers, 4 sisters. Along with his brothers, he attended Delkusha Methodist Primary School. He got married at the age of 18 years and had 11 children, 6 boys and 5 girls. After schooling, he joined his father to do farming. He also opened up a grocery store in Tonga, Rewa. Around the year 1926, he moved to Nosori town and built the first rice mill, which was known as Rewa Rice Milling Company. This mill catered for the whole of Rewa, for rice growing areas of Tailevu, Rewa and Naitasiri. Apart from rice milling, he also ground spices for the other merchants. During the Second World War, he milled wheat to make flour for the Allied troops who were then stationed in Fiji, particularly around Suva and Nosori corridors. Around 1938, he built the first power generating plant to supply electricity to Nosori and thus brought light to Nosori. Prior to this, there was no electricity in Nosori. He continued supplying electricity for 30 years until his supplier's license expired and the government of that time decided to supply power from Suva. He was also a sugarcane and rice farmer as well as a successful sawmiller. Apart from being a successful businessman, he was also a social worker. He, along with others, was instrumental in establishing the Gunimono Girls' School, which is today known as Gunimono Primary School. He was also the manager of this school during the Second World War years, and long after that, until ill health made him to retire. He was also associated with the establishment of the Gunimono Boys' School, which today is known as Gunimono Arya School. He was also authorized by then colonial administration to act as a public notary. He was also the builder of the Raralevu Cemetery. The land where the crematorium now stands was allocated by the government of that time, but during inclement weather it became very difficult to cremate the dead. So Mr. Rambisesa Chaudhary decided to build the crematorium building at his own cost. He kept maintaining it for a long time until another body took it over. During those days, there were few vehicles available to carry the dead to the crematorium. Therefore, Mr. Rambisesa Chaudhary supplied his own vehicle free of charge to carry the dead to the hilltop where the Raralevu crematorium is situated. During the Great Flood of 1930s, Mr. Rambisesa also helped to rescue many people around the Nosori area in his motorboat and brought them to his double-story rice mill building where he fed them and kept them safe until the danger from the flood was over. Now, coming back to the inception of this school, in 1953, a group of relatives and prominent people of Sawani, among whom were Mr. Shiv Narayan Chaudhary, son of Mr. Rambisesa, Mr. Vishnu Prasad Chaudhary, son of Mr. Lakshman Chaudhary,
Mr. Dev Prasad, son of Mr. Ram Otar, and others approached Mr. Ram Bisesar to donate a piece of his freehold land to build a school for the children of this area. Mr. Ram Bisesar Chaudhary, without hesitation, gave them this 5-acre plot. I say without hesitation because his own father, Mr. Rambir Chaudhary, who came from India, had done the same. Mr. Rambir Chaudhary had donated a similar plot of land for school purposes at Nakai Kongo, Rewa, where today Nakai Kongo Sanatan Dharam Primary School is standing. Mr. Vishnu Prasad Chaudhary and Mr. Shiv Narayan Chaudhary, along with others, helped establish this school in 1953, which was then known as Sawani Indian School. However, in the year 2007, the management board led by Mr. Ramendra Prasad, late Mr. Ramendra Prasad Chaudhary, at that time decided to change the school name to Ram Bisesar Chaudhary Memorial Primary School. So this is the man in whose name this school is now standing, Mr. Ram Bisesar Chaudhary. He died on the 4th of May, 1957, some 67 years ago. Today this school is 71 years old, and currently about 600 students get their primary and kindergarten education in this school. We have 21 teachers at present, 4 ancillary staff. I am the head teacher of this prestigious institution, and the school management board is led by Mr. Rajan Chaudhary as the school manager. As part of continuing the Ram Bisesar Chaudhary legacy, our vision is to establish a full-fledged high school and a vocational school in these 8-acre premises, and our management board has started alignment works on this project, which will see fruition in years to come. So this is all, dear parents and guardians. This is the story about our founder and our landowner, Mr. Ram Bisesar Chaudhary. Thank you very much. Thank you so much, Madam Head Teacher Shanita Devilal, for your wonderful history of Ram Bisesar Chaudhary. And I'm very much I'm proud to say that I'm also associated with Mr. Rajan Chaudhary, one of the Chaudhary, is the manager of this school, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे में हम आपको पिता को भी याद करना चाहेंगे, स्वर्गीय रमेंद्र प्रसाद चौधरी को, दिवंगत आत्मा को सदगति मोक्ष की प्राप्ति हुई। Madam, once again, thank you so much. Not taking much of your time, ladies and gentlemen, अब हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट हेड टीचर, आप लोग आ जाइए सामने। यहाँ पर आप लोगों को प्रभु जी की ओर से कुछ डोनेशन दिया जाएगा। आ जाइए, प्रभु जी बताएंगे कि क्या है। Hare Krishna. Hare Krishna. So today we have talked about the Word of God, and therefore on behalf of our organization and our kind donors, we have a set of 12 Bhagavad Gita, which we are wanting to give to the school library. I hope you have a school library, and at least for a start, we have got 12 copies, and I'm sure 2 teachers at once can share the copy. Start with the teachers. Just read the philosophy of life, how life is to be conducted through this Word of God, Bhagavad Gita. So on behalf of Hare Krishna Society, International Society for Krishna Consciousness, we take great pleasure and honor in presenting this to your school library. Hare Krishna. Receiving the Bhagavad Gita is the president of Ram Bisesar Chaudhary, Mr. Nanji, together with Madam Head Teacher and the manager of the school, Rajan Chaudhary. Big round of applause, ladies and gentlemen. बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हरे कृष्णा मुवमेंट संस्था को,
अब बहुत ज्यादा समय को ना लेते हुए जो हमारे आज का प्रोग्राम में अंतिम तुलसी पूजा है, महाआरती हम करेंगे एंड आफ्टर दैट द डिनर प्रसाद है विल बी सर्व्ड एट द किला गार्डन हॉल, जो हॉल है वहां पर, बट आफ्टर द तुलसी पूजा एंड महाआरती। ठीक है प्रभु जी, तुलसी पूजा। Hare Krishna. So everyone can rise. We'll just have some kirtan, and while the kirtan is happening, so Tulsi Puja and main Aarti can happen all at once. Hare Krishna. We will not take too much of the time. 15-20 minutes we should be done with the Aarti. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna,
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, उमापति महादेव की, योग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण नाम संकीर्तन की, वर्तमान श्री चैतन्य महाप्रभु की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, स्वप्रेमानंदे। हरे कृष्णा। मैं एक अनाउंसमेंट केवल कर देना चाहता हूँ। ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी है, कृष्ण बलराम और कृष्ण की बहन दुर्गा जी है, कृष्ण लीला सभी को पता है। तो इनका रथ यात्रा होता है। तो आने वाले सैटरडे को नसोरी टाउन में बुधी रोड से शुरू होगा, बुधी बैतूरी जंक्शन से शुरू होकर और बुधी रोड नसोरी टाउन, फिर विनोद प्राइमरी स्कूल पे सभी के लिए लंच का प्रबंध रहेगा। तो ये यात्रा होगा, हरिनाम संकीर्तन का यात्रा होगा। तो आप कृपया, बड़ा रथ होगा भगवान का बनाया गया है, उसमें भगवान को बिठा के और दर्शन कराएंगे। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग थोड़ा सा समय निकाल के आइए। रथ के बताया गया जो रथ खींचता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, ये रथ की महिमा है। तो आप लोग आइए और दिन में 10 बजे से 10:30 बजे से 1 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। तो आप किसी भी समय आके हमारे साथ दीजिए और आपकी बड़ी कृपा होगी और आप पर भगवान का आशीर्वाद बना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संगीत कलाकार के साथ में जो नृत्य कर रहे थे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा आर्मी के ट्रूप की तरह हो। एक स्टेपिंग हम कोशिश कर रहे थे बहुत देर से, हम राजन भाई आनंद जी कोशिश कर रहे थे वो स्टेपिंग कैसे लेना है, तो हमारा घुटने में दर्द होने लगा। लेकिन क्या बात है, सब प्रभु की कृपा है। बिल्कुल महाप्रसाद प्रसाद बिल्कुल तैयार है, लेकिन जाने से पहले जो भागवत गीता वहाँ पर रखा हुआ है उसको आप आकर जरूर जो परिवार के साथ में लेना चाहते हैं, जैसे प्रभु जी ने कहा है, प्रभु जी लोग आकर दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप आके हरे कृष्ण। तो साथ साथ में आप आके भगवान का दर्शन कर सकते हैं और वहाँ पर भगवत गीता आदि है और वहाँ पर किताब भी ले सकते हैं। और हमारे भक्त की ओर से और हमारे